Well, right? Yes, yes. ओके, तो लास्ट लेक्चर में जो हमने बेसिकली पढ़ा था वो था जर्नी ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो इसे समझने के लिए फॉर एग्जांपल हम किसी ऐप का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जोमेटो। तो हेयर दिस इज वर्किंग एज अ क्लाइंट। तो इसमें जाके जब मैं कुछ सर्च करती हूँ तो दिस सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर या फिर डेटाबेस, एंड देन दिस दैट रिक्वेस्ट दैट गोज, तो सर्वर उसे प्रोसेस करेगा एंड इट विल सेंड बैक अ रिस्पॉन्स, जो कि मुझे अपने जोमेटो की ऐप पे सपोज दिखता है। सपोज मैं कोई फूड आइटम डालती हूँ एंड इट सेंड्स मी बैक अ लिस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स दैट प्रोवाइड दिस फूड आइटम, ऐसा। तो दिस इज द जर्नी ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब दिस ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन कि यहाँ पर एपीआई का काम क्या है। जो एपीआई का काम है कि क्लाइंट और सर्वर को कम्युनिकेट करने में हेल्प करना। तो जैसे यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट जाएगी या रिस्पॉन्स जाएगी, एपीआई उसको भेजने और रिसीव करके भेजने में हेल्प करेगा। अब अगर दो लोग हैं और उनको सेम लैंग्वेज नहीं आती है तो ऑब्वियसली दे वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट। दैट इज वाई एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होती है जिससे क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट करते हैं एंड व्हाट एपीआई वर्क्स ऑन। तो फॉर एग्जांपल तुमने सुना होगा एचटीटीपी के बारे में। तो एचटीटीपी इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स या फिर रूल्स जिसको क्लाइंट और सर्वर दोनों समझते हैं, एंड दैट इज हाउ दे कम्युनिकेट वाया एन एपीआई। ओके, उसके बाद जब क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट करता है तो सो देयर आर स्पेसिफिक एक्शंस और मेथड्स जो कि जो क्लाइंट है कैन आस्क फॉर। उसमें देयर इज क्रिएट, which is to like add some new data. For example, अगर तुम Zomato का ही option लेते हो, तो if you want to suppose you sign up for the first time, so you will be added as a user in their database. तो एक नया वहां पर कुछ क्रिएट हो जाएगा तुम्हारी डिटेल्स के साथ। देन देर इज रीड, जहाँ पर इफ यू, जैसे कि हमने पहले ऑप्शन लिया था कि सपोज मैं कुछ वहाँ पे फूड आइटम का नाम डालती हूँ, तो वो रीड करके उस डेटा को मुझे वापस करता है। सो दैट इज रीडिंग सम डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। देन देयर इज अपडेट, कि सपोज मुझे अपनी ईमेल एड्रेस को चेंज करना है तो आई एम अपडेटिंग दैट देयर। और डिलीट इज कि मेरे को सपोज अपना अकाउंट ही डिलीट कर देना है। सो दीज आर द CRUD ऑपरेशन, CRUD। ओके, देन फर्दर we talked about REST API actually. So REST API क्या होता है कि इट्स अ काइंड ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल या फिर एक तरीका जिससे मैं APIs को सेटअप कर सकती हूँ एंड इट विल बी बेटर एंड इजी टू सेट देम अप। तो दो या थोड़े से जो प्रॉपर कंडीशंस होते हैं जो मुझे बताते हैं कि दिस API इज REST API इज, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें HTTP प्रोटोकॉल सेटअप होगी। मतलब क्या होगा कि जो मैंने CRUD ऑपरेशन सेटअप करे हैं, they will be mapped to certain like words in that HTTP प्रोटोकॉल। जैसे कि अगर create है तो वहां पर for that there will be post। अगर read है तो there will be get, अपडेट के लिए put होगा, and then delete के लिए delete होगा। तो वो HTTP मैपिंग होगी एक पर्टिकुलर, and these are the methods that I can use। जब मैं आगे जाके अपना API सेटअप करूंगी कोड लिखकर, तो वहां पर मुझे ये जब भी कोई रिक्वेस्ट जाएगी तो मुझे वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और मैं ये पोस्ट गेट पुट और डिलीट के हिसाब से ही सेटअप करूंगी। आई विल नॉट बी राइटिंग क्रिएट रिट्रीव और समथिंग लाइक दैट। तो HTTP मैपिंग अगर है, सो दैट्स वन थिंग दैट टेल्स मी कि ये REST API है। फर्दर जो भी डेटा रिसीव होगा या फिर रिस्पॉन्स कैसे जाएगा, इट विल बी इन JSON। सो JSON क्या होता है? JSON इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो इट्स जस्ट अ डेटा फॉर्मेट जो कि की वैल्यू पेयर्स होते हैं उसके अंदर। इट्स नथिंग नथिंग मोर देन दैट, तुम देख सकते हो जाके। तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बाय अ ह्यूमन, और जो तुम्हारा कंप्यूटर है वो भी उसे पार्स कर सकता है इजीली। दैट्स व्हाई JSON इज यूज्ड। तो REST API is done. After that, sorry, we learned about Flask as a framework. तो Flask क्या करता है? It provides us with certain functions which are which help us set up an app or an API here. तो जो भी बेसिक फंक्शंस हैं
जैसे कि कैसे एक रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा, उसे उसमें से डेटा कैसे रिक्वेस्ट एक्सट्रैक्ट होगा, रीड होगा, ये सब फ्लास्क तुम्हें करने में हेल्प करता है। बेसिक सी एपीआई तुम्हें बनाने में वो हेल्प कर देगा। तो बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट सेशन। यहाँ तक सबको समझ आ गया? अ, एक बार रिस्पॉन्ड कर दो ताकि समझ आ जाए। वी कैन मूव फॉरवर्ड आफ्टर दैट। ओके, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है। तो अगर किसी ने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था तो मतलब बाद में जाके यू कैन लुक एट द लेक्चर स्लाइड्स। लेक्चर की वीडियो भी लास्ट वाली थोड़ी डिले हो गई थी ड्यू टू सम प्रॉब्लम, बट वो हो जाएगी अपलोड थोड़ी देर में। एंड या, so now we are going to move to the second session of the second lecture, which is authentication. ओके, तो यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ऑथराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्यों चाहिए, एंड देन देर आर द टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, एंड आफ्टर दैट देर इज अ हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन फॉर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो उसमें मजा आएगा काफी, तो मतलब एंड तक अच्छे से सुन लेना, एंड आफ्टर दैट वी कैन डू द हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है ऑथेंटिकेशन और एक होता है ऑथराइजेशन। तो इफ एनीबडी वांट्स टू टेल मी इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जस्ट अ वेरी बेसिक डिफरेंस, आई डोंट वांट कि मतलब कुछ इसके ही कॉन्टेक्स्ट में चाहिए। एनीबडी, मतलब चैट में लिख दो इफ यू डोंट वांट टू लाइक टर्न ऑन योर माइक, इट्स फाइन। है, नोबडी वांट्स टू से एनीथिंग, मतलब कुछ तो, कुछ भी बेसिक ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ओके, वी हैव गॉट वन आंसर। और कुछ? एनीबडी एल्स? ओके फाइन, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो किसी ने आंसर किया था वो सही है, बट लाइक उल्टा लिख दिया। सो ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन इज टू वेरीफाई कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, तो अगर सपोज तुम एग्जांपल लो, तो जब तुम एलेक्सी में जाते हो तो देर इज एन आईडी यू हैव। ठीक है, एंड तुम उसे गार्ड को दिखाते हो, एंड गार्ड वेरीफाइज एंड ऑथेंटिकेट्स कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, और वो तुम्हें एंट्री दे देते हैं। सो दिस इज ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन में क्या है कि यू हैव टू चेक दैट इज दिस द पर्सन हु दे आर क्लेमिंग टू बी। कि मतलब ये ना हो कि मैं किसी और को का आईडी लेके चले जाऊं। ठीक है, आई थिंक एलएचसी में इतना ध्यान से नहीं देखते, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम ऑथेंटिकेट करो कि समवन शुड नॉट इम्पर्सनेट मी। तो दिस इज ऑथेंटिकेशन, दिस इज वेरीफाइंग द आइडेंटिटी, जस्ट सिंपल दिस। आफ्टर दैट इज ऑथराइजेशन। तो जब तुम्हारा ऑथेंटिकेशन हो गया कि हाँ दिस पर्सन इज द पर्सन जो कि वो क्लेम कर रहे हैं कि वो है, एंड दिस पर्सन कैन लाइक एंटर दिस प्लेस, उसके बाद होती है ऑथराइजेशन। तो ऑथराइजेशन इज एक्सेस क्या क्या कर सकती हूँ मैं अंदर जाके। फॉर एग्जांपल एलएचसी ही ले लो, तो एलएचसी में क्या है कि दे एज अ स्टूडेंट तुम लेक्चर हॉल को एक्सेस कर सकते हो किसी पर्टिकुलर, बट देयर विल बी सम प्लेसेस जहाँ पे तुम नहीं जा सकते, मे बी सम एडमिन पर्सोनल कैन गो देयर, बट तुम्हें अलाउड नहीं होगा। सो दिस इज ऑथराइजेशन। वही डिफरेंस हो गया कि आइडेंटिटी वेरीफाई करना, एंड देन ग्रांट द एक्सेस टू रिसोर्सेज, देन ऑथेंटिकेशन सबसे पहले होगी, देन देयर विल बी ऑथराइजेशन। सो इट कैन बी ऑपोजिट। ओके, सो अब व्हाई इज ऑथेंटिकेशन नीडेड? अब इसका कोई आंसर करना चाहता है? जस्ट राइट इट इन दी चैट, इट्स फाइन। मतलब अदरवाइज अगर तुम बोल भी दोगे इट्स फाइन, गलत भी बोल दोगे कोई बात नहीं। मतलब बहुत स्टार्टिंग बेसिक बिगिनर्स हो तुम लोग, इट्स फाइन अगर तुम गलत बोलोगे तो, बट आई जस्ट वांट रिस्पॉन्सेज।
मतलब बेसिक सोचो कि मुझे ऑथेंटिकेशन चाहिए ही क्यों। मैंने एपीआई सेटअप कर दिया, वो रिस्पॉन्स ले रहा है, रिस्पॉन्स भेज रहा है, रिक्वेस्ट उठा रहा है, ये सब कर रहा है, तो उसमें ऑथेंटिकेशन की क्या जरूरत पड़ेगी मुझे। बेसिकली मुझे कहीं पे भी मैं लॉग इन करती हूँ बार बार, तो मुझे उसमें क्यों करना पड़ता है, वो ऑथेंटिकेशन क्यों चाहिए। ओके फाइन, इट्स फाइन। हाँ, तो ऑथेंटिकेशन मुझे क्यों चाहिए। बेसिक सी चीज है सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, कि कोई मेरा पर्सनल डेटा अनऑथराइज्ड वे में ना ले पाए। कि दूसरी बात कि जो राइट यूजर है वही डेटा एक्सेस कर पाए, मेरा मुझे इम्पर्सनेट करके कोई और मेरा डेटा उठा के ना लेके जाए। अगर तुम बैंक का कुछ देखो या फिर सपोज सोशल मीडिया अकाउंट देख लो, तो इफ somebody logs in with my यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो वो इंसान जाके मेरे पर्सनल डेटा के साथ हैम्पर कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। तो इसीलिए इसीलिए अच्छी तरह से लाइक अ गुड लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड इन दीज थिंग्स। एंड दूसरी चीज है कि कई बार पर्सनलाइज्ड एक्सेस के लिए भी अच्छा रहता है, कि फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पे लॉग इन किया एंड देन आफ्टर दैट वहां पे लिखा आता है कि वेलकम विद माय नेम, तो इट्स गुड पर्सनलाइज्ड टच टू द एंटायर वेबसाइट। फॉर दैट आल्सो ऑथेंटिकेशन कैन बी यूज्ड, but basically it is for security purposes only. Okay. So far, you've understood like this part of the meeting, right? Thumbs up ही भेज दो भाई, मतलब chill है. Okay. Yeah, that answer is correct as well for the authentication. Okay. तो उसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन कौन सी है। सो इट कैन गो एज सिंपल एज बेसिक ऑथेंटिकेशन, जिसमें तुम एक यूजर नेम और एक पासवर्ड भेज रहे हो बस। देन देयर इज सेशन बेस्ड, मतलब तुम इनके नाम से ही समझ सकते हो कि इसमें क्या क्या यूज हो रहा है। तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन डिटेल इनमें सब में क्या होता है, बट द बेसिक होते हैं जो है, देयर इज बेसिक ऑथेंटिकेशन, सेशन बेस्ड, टोकन बेस्ड, and then there is JWT, which is JSON Web Token, and OAuth. Okay, so these are just the names. So we are going to start with basic authentication. Basic authentication में क्या होता है कि you are just going to provide a username and a password in the request. अब जब तुम भेजोगे जो भी पासवर्ड में, सॉरी रिक्वेस्ट में यूजर नेम और पासवर्ड, तो वो एक ऑथराइजेशन हेडर के साथ जाएगा। ऑथराइजेशन हेडर इज तुम्हारा एचटीटीपी में एक हेडर होता है जिसमें तुम्हारे क्रेडेंशियल स्टोर होके जाएंगे। नाउ दीज क्रेडेंशियल्स विल बी बेस 64 encoded. Base 64 is just a way to encode the data, but there is a difference in encoding and encryption. तो यहाँ पे encoding हो रही है। Encoding में you are just changing the data format. It is very easy to decode it. अगर कोई भी उस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लेता है एंड दैट पर्सन इज एबल टू गेट दैट जो भी एनकोड होके डेटा था, दैट पर्सन कैन इजीली डिकोड इट एंड दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। तो ये इसका कौन होता है बेसिक ऑथेंटिकेशन का, कि क्रेडेंशियल्स जो है दे कैन बी इजीली डिकोडेड। दूसरी बात, आई हैव टू सेंड दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड इन ईच रिक्वेस्ट। तो ये भी एक कौन है, क्योंकि एक मैं हर बार भेजूंगी तो कोई भी रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट हो सकती है एंड दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम बिकॉज फिर दैट पर्सन कैन इम्पर्सनेट मी एंड गेट माई डेटा। दूसरी चीज वही कि ये इनकोडेड होते हैं, इनक्रिप्टेड नहीं। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि अगर मैं HTTP प्रोटोकॉल यूज कर रही हूँ तो it's going to be a problem for me. But if I use HTTPS, which is Hypertext Transfer Protocol Secure, तो इसमें क्या होगा, the data, this username and password that I am sending is going to be base 64 encoded only. But जो entire communication होगी मेरी between the server and the client, it is going to be encrypted. तो जो encrypted data होता है, it is very difficult to be decrypted, क्योंकि उसके साथ एक decryption key होती है। If that person does not have the decryption key, तो वो उसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा एंड माई डेटा इज सेफ। तो इसलिए इट्स बेटर इफ आई यूज HTTPS इंस्टेड ऑफ HTTP इन दिस केस, बट ओवरऑल बेसिक ऑथेंटिकेशन इज नॉट दैट सिक्योर। ओके, सो द नेक्स्ट, हाँ तो यहाँ पर क्या है कि सपोज मैंने कर्ल रिक्वेस्ट भेजी है। तो कर्ल रिक्वेस्ट इज अ कमांड लाइन टूल जो तुम्हें रिक्वेस्ट भेजने में और रिस्पॉन्स गेट करने में हेल्प करता है।
तो यहाँ पे जैसे मैंने यूजर नेम और पासवर्ड आई एम सेंडिंग इन द कर्ल रिक्वेस्ट इटसेल्फ विद द डेटा लाइक एपीआई एंड पॉइंट जो मुझे एक्सेस करना है. So when it is encoded, so it is a string of alphabets and numbers and symbols. तो ऐसा होता है कि यू कैन फाइंड ऑन गूगल मतलब कि बहुत सारे टूल्स जो बेस 64 एनकोडेड वर्जन को डिकोड करके तुम्हें दे देंगे. तो इट्स नॉट दैट सिक्योर. एंड देन इट्स जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन एनकोडिंग एंड इनक्रिप्शन जो कि मैंने बताया था. एंड डिक्रिप्शन के बिना यू कांट डिक्रिप्ट इट. देन नेक्स्ट वी हैव सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन. तो सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन इज बेटर देन बेसिक ऑफ कोर्स. अब इसमें क्या होता है कि तुमने कुकीज के बारे में तो सुना ही होगा. जैसे तुम कभी वेबसाइट पे जाते हो तो इट आस्क्स यू समथिंग अबाउट कुकीज. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब तुम सपोज कहीं जाके लॉग इन कर रहे हो किसी वेबसाइट पे, तो एक इफ यू आर ऑथेंटिकेटेड तो क्या होगा कि एक मतलब जो भी तुम्हारा एक सेशन आईडी क्रिएट होती है वहां पे और एक फाइल में सेव हो जाती है विच इज अ कुकी. अब ये कुकी जो है वो जाके ब्राउजर पे सेव हो जाएगा. एंड एवरी टाइम यू सेंड अ रिक्वेस्ट तो ये कुकी जाएगा इन द रिक्वेस्ट नॉट योर क्रेडेंशियल्स. अब जब वो तुम एपीआई जैसे सपोज तुमने कुछ रिक्वेस्ट भेजी तो वो सर्वर या एपीआई पे जाएगा और वहां पे वो सर्वर चेक करेगा कि मेरे पास ये सेशन आईडी जो कुकी के अंदर थी वो आई है, वो क्या उससे मैच कर रही है. इफ इट मैचेस देन यू आर ऑथेंटिकेटेड. तो ऐसे सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन काम करती है. तो एवरी टाइम यू मेक अ रिक्वेस्ट तो तुम्हें बार बार अपने क्रेडेंशियल्स नहीं भेजने पड़ते. जो कुकी है वो अपने आप ही इट गेट सेंट विद द रिक्वेस्ट जो कि ब्राउजर में सेव हो जाती है. और उसके बाद इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि देर इज सर्वर साइड स्टोरेज. क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि सर्वर में वो सेशन आईडी स्टोर्ड होती है जो कि वो चेक करता है कि जो कुकी वैल्यू से मैच कर रही है कि नहीं. अब एक सर्वर जो है विल बी डीलिंग विद मेनी क्लाइंट्स एट द सेम टाइम. तो इस वजह से बहुत सारी स्टोरेज प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. बहुत सारी सेशन आईडीज उनको स्टोर करनी पड़ती है. एंड दिस इज डेफिनेटली नॉट सुटेबल फॉर रेस्टफुल एपीआईज बिकॉज रेस्टफुल एपीआईज जो होती हैं दे आर स्टेटलेस. मतलब each request will be independent of the previous one or the next one. उनका कोई बीच में लिंक नहीं होना चाहिए बट यहाँ पर लिंक हो रहा है बिकॉज एक सेशन आईडी से तुम सब लिंक हो रहे हो, सेशन डेटा लिंक हो रहा है. सो दिस इज नॉट गुड फॉर रेस्टफुल एपीआईज. दिस इज नॉट स्टेटलेस सॉरी. और इसी वजह से सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन का ये कौन है बट स्टिल इट्स गुड बिकॉज ये बेसिक ऑथ से बेटर है. आफ्टर दैट वी हैव टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन. टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि जब भी तुम लॉग इन करते हो वहीं पर जाके तो एक टोकन मतलब तुम्हें एक टोकन मिलेगा विच विल बी स्टोर्ड इन द लोकल स्टोरेज. अब ये सर्वर साइड पे जाके स्टोर नहीं होता है विच इज वाई यहाँ पर रेस्टफुल एपीआईज वाली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. जिससे जो भी रिक्वेस्ट जाएगी इट विल बी स्टेटलेस. तो ये सेशन बेस्ड से इसलिए बेटर है. अब जो टोकन ऑथराइजेशन हेडर में हर बार जाएगा जब भी तुम कोई रिक्वेस्ट डालोगे तो वहां जाके वो टोकन चेक होगा सर्वर साइड पे जाके कि ये टोकन जो है ये सही है कि नहीं, ये टैम्पर तो नहीं हुआ है, ये अभी भी मतलब एक्सपायर तो नहीं हुआ है. बिकॉज सम कुछ टाइम के बाद टोकन एक्सपायर हो जाते हैं और तुम्हें मैनुअली उन्हें टिक करना पड़ता है. सो इफ दैट हैजंट हैपेंड तो वो टोकन ऑथेंटिकेट हो जाएगा एंड देन यू विल बी ऑथेंटिकेटेड. और जो तुम्हारी रिक्वेस्ट है फर्दर आगे जो भी तुम्हें सपोज पोस्ट रीड कुछ भी करना है तो वो आगे तुम कर सकते हो जाके. सो दिस इज टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन. अब after this I will take over and he'll tell you about JWT and will help you in the hands-on implementation for JWT. यहाँ तक सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो बता देना. मतलब you can write it in the chat. I'll solve it there only. Okay. So now Aman is going to take over. I'll stop presenting my screen. Okay, so hello guys. I'll be covering the JWT part of the session, and we'll basically be implementing it in our Flask API, which we basically used we created in the last session. Right, I'll just share my screen now.
All right. Just uh-huh. JSON Web Token is basically a way to store, basically authenticate users without storing any user data on the server side. It basically contains all the user data we require along with the expiration date and everything, right? So I'll just explain the JWT structure by going onto this website. Okay. So, uh, so here basically the JSON Web Token has basically three parts. The first part is the header, the payload, and the signature. The payload is a part where we actually store the user data, like for the name, the user ID, anything we want to, anything which helps us verify the user, the roles, etc. The header part contains the type of the token and the algorithm we used in the hashing. I'll come to the hashing part later. And then we have the signature part. In the signature part, what we basically do is we'll take the header, we'll take the payload and a secret key, and we'll combine all these three things, and then we hash it using some algorithm, right? Okay. So now, how do we ensure uh, how do we basically ensure that whatever token we are getting is the correct token? No one is tampering it with it. We basically do it with the signature part of the token. The user does not have access to the secret. Uh, so we use the secret to basically verify the authenticity of this token. Uh, yes, the header and the data part is not hashed. It is basically uh, just base 64 URL encoded. It is a standard algorithm which it's not encryption. It's basically just encoding. एनक्रिप्शन एंड एनकोडिंग में ये अंतर होता है कि एनक्रिप्शन में वी यूज अ की टू to to basically encode encryption we basically use a key to convert our information to something, and to decode that information we need that key. But in encoding we will just use some standard as specific algorithm to convert it into something else, and we need not have anyone can convert the data back to whatever we have. So if someone gets hold of this JSON Web Token, they can easily see our data and our header. They can easily decode our data and header, but if they for some reason, if they somehow change the data, uh, we can easily at the server side we can get to know that the data is tampered with by using the signature, right? Because the user does not have the secret, they cannot give us a valid signature. So whatever we can easily get to know, get verify that the token we are getting is valid or not, right? So yeah, uh, the web token consists of three parts: the header, the payload, and the signature. Now let's just move on to implementing it with Flask. Does anyone have any doubts till here? Anyone? You can just send it in the chat if you want. Uh, all right. So let's just move on to implementing it in Flask. Okay. So see, look, tampering will not change the signature because I'll just explain the flow of how the token is generated. Then I'll move on to your question, right? Then I think you'll be able to understand it better. So uh, so when so first, before generating the token, the user basically sends the login credentials.
On the server side, we'll create the token using the credentials, and we'll put in the user data into it and send the user data back to the client. And in further request, the user will send the token to us, and we'll validate it and send a response back to the user. Right. Okay. So now, as I said, yeah. Uh, Now, the this part is the signature part. We use it to verify the authenticity of the token, whether the user has tampered with it or not. Okay. So how did we generated this on the server side, right? To generate this, we basically use the data, the whatever the payload data we have of the user, the header, the headers, whatever the token type, and our secret key, which only we know on the server side. Okay, when we combine this, we'll get a unique signature to it, right? So now, if the user for some reason tampers with the data, suppose he changes the role, suppose he changes the user ID or something, and sends the token to us, we can basically what we'll do is basically we'll use this payload data, we'll use this header, and the secret key we have stored on the server side, we'll hash it. So we'll get a because the user has tampered the data, we'll get a different output of the hash. So with this we can verify with this we can verify the authenticity of the token. So the user has no way of of getting a valid signature after tampering with the data. Now do you get it, Amber? The original hash is not stored. We just store the secret key, right? So with every distinct input, we get a distinct output for a hash function. So there is no way you can tamper. You can change the data of the payload and get the same hash. Okay, right. So we can move on to implementing it in Flask. बहुत ही simple होगा. So yeah. Uh, this was the Flask API Gazelle implemented in the last session. I'm just gonna use it and we'll add API to we'll just add authentication to this, right? You all can follow along if you want. I'll just first activate the virtual environment. For this, we are gonna use this library known as PyJWT. Yes, yeah. We'll just use this library called PyJWT, which will help us easily make tokens and verify the tokens. I'll just go to the page of. So this is the documentation page. बहुत ही simple है इसमें इसका use करके token बनाने के लिए. We'll just give it the payload, a secret key, and the algorithm to hash, and we'll get the token. And to decode it again, it is pretty simple. So yeah, to actually add authentication to the API, we should first create a login route. As I मतलब, yeah, login route so that the user can first send us the credentials. We'll verify it, and then we'll send the token as a response back to the client side. And then further request, the client should basically include the token in the headers and send it to us. We'll validate it, look at whether token has expired, look at whether the user has this permissions to access this resource, access this endpoint, and we'll send the response accordingly. So first, let's just create a simple login route. Uh, we'll generally send the whatever the login credentials are. We generally use post method to send the credentials. So I'll just quickly write a login function. Right. So in a normal lab, in the actually whatever your in real life use cases, we'll actually use a database to store all this passwords, obviously, and we'll send the whatever username and passwords we are getting from the client side.
will query the database and then we'll verify whether the password is correct or not. But since we didn't set up a database here, we'll just use some dummy if else statements to and not exactly verify uh, will not exactly query the database. Yeah. So first uh, we'll just take the whatever the data we get. Mhm. And then we'll take the if anyone has any issues in the implementation part, you can just stop me and ask me anywhere. Okay, so I'll just write some dummy statement to check whether the username is correct or not, something like. Okay, so now we'll generate the token if the let us suppose that this with this we verified the user is valid. Now let us just generate a token. So to generate a token, we basically need the payload, basically the data we want to store about the user. So let us just make a dictionary, and in that we'll store the user. Sub is basically used to store something related to the user. So let us just store the username of the user in this, and we want the token to expire after a certain amount of time. So we can just use this. Uh, we can just write a exp the key exp and give it some value so that the token expires after some time. We'll use the inbuilt Python library of date time for this. So date time dot date time dot utc now will give us the current time, and will basically set a time of, let's say, an hour. So what this does is basically take the current time, add an hour to it, so that this will give the expiry will give us a time 1 hour in the future. So after 1 hour, this token will expire, right? Uh, so now let us just convert the token using the JWT library we installed. So yeah, I'll just install it. Yeah, I already installed it before. So if you haven't, just install it using pip install pyjwt. Right. Any doubts still here? Okay, so let's proceed, I guess. So to actually make a token, we just, as I said, it is using this library. It is pretty simple uh, to make a token. So we just use this. The first argument is just the payload. Okay, and we need to give it a secret key. Now we generally store a secret key like this over here. This config is basically a direct is something like a dictionary where we store where we store secret keys, other URLs related to the app, so that we can use it multiple times in different places. So we'll just define it, and here we'll give some big string which is difficult to decode. Obviously, for security reasons, we'll use it to hash our payload and headers. Uh, so we can basically you can give it anything you want to. Uh, it's definitely not secret. We'll generally generate some big hexadecimal some big string using some random generator and do it right. So I'm gonna give the key as the secret key app.config and the secret key, right? And then we should specify the algorithm we are going to use. I'm just going to use one of the algorithms, HS256. Yeah, and then we'll just return this token to the user.
All right. So yeah, this is when the user is authenticated. If it's not authenticated, we can just send some request saying invalid credentials or something with some status code. Right. So this is our basic login route. We completed this. We can just test it using our Postman. Uh, so yeah, we'll just send up. Okay, I didn't start the app. Right. Okay. Just methods. All right. All right. The app is running. We'll just send a post request to this, and this is our token. We'll use this to send our request, our further request to our API. So I'll just copy it. Right. Now we have completed the login route. We have the token is successfully generated. Yeah, we the library automatically encodes the header, the payload, the hashes it with our secret key, and then sends it to us. Right. So now let us now define in each route we should actually verify the token, and accordingly we should give responses. So we can actually in every route we can specify certain lines of code verifying the token, but that's not a very good practice in code. We want to most generally we write code such that there is absolutely no repetition. Like we want to minimize repetition as much as possible. So we use something called as decorators. It's a Python feature, which I'll just uh, as I code, I'll just show it to you all like how it works. It uh, it basically what it does is we'll just write something like for example, I want to add authentication to this route. I'll write something like token required. I'll define this function later. Okay, we'll just write something like this, and we'll define this function this decorator somewhere else, and it automatically does the authentication whatever we want to. Okay, so let's just define this function over here. Yeah, so this decorator actually takes in this function as this input. Okay, and then we have a wrapper, which basically just returns this function to us. Let us suppose. Okay. Okay. Now uh, before in this decorator, what we do before in this decorator, we add the authentication whatever we want before the function is returned. If the authentication fails, we'll basically just return a response to it. Okay. Also, in here, for example, this function does not take any inputs whatsoever, but this function takes some inputs. So there's this feature in Python where we specify something like this, args and cogs. Basically, these are general parameters. When we don't know the number of parameters a function is taking in, we use this, and the Python automatically packs all the parameters into a tuple or a dictionary in this case, or a tuple here. Yeah. So now let's just proceed to adding the verifying the token, right? So as again, we'll just use the library to verify it. I think there's some doubt over here. What was the data type of the request? In the request, this is just a JSON data type. It is commonly used to sending request because it's simple. Does it answer your doubt? Okay, all right. So let's just add the token verification. Uh, so first we'll just get the authorization token from the header. First, let's look how the authorization header actually looks like. So for example, we have this endpoint over here. So in the headers, we can actually just like, for example,
Postman makes it easy to add this headers over here. So okay, just yeah. This is how this header actually looks like. First, we'll have bearer followed by ABCD, followed by the token whatever we give. So bearer actually indicates the type of token we have. In our case, in JWT, we generally use this bearer token. Okay, and after bearer, we'll basically have whatever token we received over here. We'll send the request to our API, and then there will verify. Okay, so let us just take the header from the request. So we basically do that by using this get authorization. This will give us the header. Of course here कुछ pitfalls ऐड कर देंगे, कुछ checks ऐड कर देंगे कि अगर auth token नहीं है या if auth token is of some different type. So auth tokens multiple types के होते हैं वैसे, इधर बहुत सारे auth tokens पड़े हैं, so you can use them in some other way. So we'll just return some simple statement like token missing or something. All right. So अब हमें token decode करने के लिए again we'll just use the library. Let's say JWT dot decode, and to decode it we just need to give the encoded JWT, the secret, and the algorithm we used to hash the hash the data and the signature to get the signature, to data and the secret key to get the signature. All right. So we'll just give it the auth token, our secret key, and then our algorithm. We use HS256. Right. Now, if the now this library works in this way, right? This way such that if the JWT is invalid, like if the token we received here is invalid, it throws an error. So we need to actually have this in a try catch block. In Python, is try except actually. Hmm. So what this does is, if the JWT is valid, this code runs fine. But if the token is invalid, suppose the user has tampered with the token, or suppose the expiry, or suppose the token has expired or something, we'll get this will automatically raise an error, and and the code will move on to this except block over here. So here we'll just uh, forward a message response saying it's the token is invalid. So if the code has, so now if the after the token has been decoded, we can just proceed to the function can just move on to the implementation of whatever our whatever root जो भी roots में defined है उस पे proceed हो जाएगा, क्योंकि हमने इधर return f with whatever arguments the function received हमने इधर कर दिया, तो उधर चले जाएगा. So now we can just test it uh, the, test it using Postman. And there's one more thing over here that we need to take note of. So in Flask, what happens is every root is actually mapped to a specific function, and ये function दो different roots के लिए same नाम से नहीं हो सकता है. In that case, it will just throw an error. So when you use this particular decorator, something like this, and on multiple roots, right? What फ्लास्क इस फंक्शन का नाम जो है वो मिट जाता है. बेसिकली पाइथन डजंट replaces this function name with this wrapper name. This is how it works in Python actually. So and since we use this decorator on two separate roots, और दो रूट्स के लिए सेम ही फंक्शन नाम से डिक्लेयर हो जाता है वो फंक्शन.
So say we'll get an error, we can just run the app and look at the error. Just I didn't save it. All right. Yeah. We'll get the error. View function mapping is overwriting an existing endpoint. So basically what it does is both of these endpoints are have this function name as a wrapper. So due to that, we'll get an error. So to avoid this, we'll use something known as a wraps. It is a inbuilt decorator, which will basically make this function not change the name to wrapper. It will maintain the name of the function to whatever we defined it in earlier. So wraps and just do something. Yeah, now it should work. Yeah, it's working. Multiple these in दोनों routes को access करने के लिए we need a token. For this route we need not have a token. That's just how it does. So now I'll just test it with Postman. So we are just sending some fake token to this thing, and if I send it a request, it just says token invalid. If I send it a token, if I actually paste the token I received over here, I'm pasting it over here. It gets automatically put in the headers. Now if I send the request, just let me copy. Uh, Actually, just uh, okay. Here we made a mistake. We actually now once we receive the header on the on the server side, it actually contains the bearer followed by the token. So we should split the header and use only this part of this. So I'm just gonna do that first. Okay. So it is our token dot split. So what this does is basically it splits this whatever header we are getting into two parts, and we are gonna use the second part of it, and we'll decode that part, right? So this should work now. Yeah, all right. Not exactly sure what's called header. Just a minute. Okay, so the token is the first part of this. Just a second. We are encoding it in the right way, and then we are using the. Okay, so I think we should mention this. Okay, right. I shouldn't have used the dictionary. I should actually just read it. This thing, like that was the error. Sorry for that. So yeah. So now it works. We are using the token, and it authenticates the token and just gives the response. If we just tamper with the token in any way, for example, I just do this.
the library automatically throws an error and it goes here and it gives a response saying token invalid. Now further we could add roles, like you can add user specific roles, for example, admin or anything. To add that, it's pretty simple. Whenever you're logging in, we query the database, we get the role of the user and just add a separate field. For example, I'm not, and I could, after querying the database, suppose I get that the user is an admin, I could just add a role like this over here. The token would be generated, and then and then over here I could, for example, decode the data like here. So the role of the user can data.get something like role. Okay, so I'll get the role of the user, and yeah. So now we could, to verify that for some routes we want to verify that the user is an admin, for some routes, for some other role for example. So for example, I might want this route to be only accessible. I'll just use this instead. I might want this route to be accessible only to admin. So I'll just declare some other decorator, and I'll use the same decorator code actually. Okay, so it's pretty simple. Just use the decorator of the admin, and here we'll check whether check check whether user is admin or not. Right. So once we decode the data, we'll just store the role of the user in the request, uh, in the whatever the incoming request the Flask apps get is stored it in it stores it in a basically an object called as request. It's a global object. You can access it from anywhere. So we'll just create another field in that request itself and store the role over there. And then using that role, we'll verify whether the user is an admin, and the user is an admin, and allow allow them to access the root. Like for example, if the user is an admin, will allow the function to run. Will allow the function this endpoint to run. Otherwise, we'll just return return a response saying not authorized. Yeah. this should- So now, if I just send the login request again, I'll get a different token. So since we increase the number of fields in the payload, obviously the token size has increased because we are storing more data in the token right now. Uh, so I'm just gonna copy this, paste it here, and if I send, I'll now this will uh, ve- verify whether the user is admin or not. Y'all can just change the role over here and just check whether the user is authorized or not. So this is basically how we implement JWTs in Flask. There are other external libraries too, which makes it much easier. You need not write the decorator functions like this. They already implement the decorator functions and provide other methods too for more security. So yeah, this is how JWT works. So let's move on to the parts okay. So this is just code y'all can refer to. So one thing we should keep in mind is that, as I said, this JWT does not hide the data in the payload. It is just encoded in the URL 64 format, URL 64 format, and base 64 URL format, and we can only verify that the JWT we are getting is correct or not. We cannot uh, hide the data from who, if someone gets hold onto the JWT, we cannot hide the data which we stored in the payload, right? If we want to store any sensitive data in the JWT,
encrypt it in some way using some other external mechanism, and then put it in the payload and then transfer it. Till here, does anyone have any doubts in the implementation or anywhere? Just give a thumbs up if it's fine. Okay, so let's move on. So that was it. That was JWT. Another like OAuth is basically used if a user wants to give some access to some resources on his behalf to some other party. Uh, I'm not again. I'll not be explaining the. I'll not be going into detail with this one. You can explore it later. So this is another way in which users authenticate. Basically, they give you permission to access the resource on their behalf, right? So let's move on. Now we looked at JWT, all the session-based authentication, the basic authentication, and the token-based authentication. Each has its own drawbacks and pros. Like in the basic authentication, we it is super easy to implement. You just need to send the username password, just need to check it and send a response accordingly. But the problem is you need to send the username and password every time. In the session based, it is a bit more secure. You can anytime if you want to revoke access to some specific user, you can just do it on the session side itself. But again, the con is that you actually need to store something on the server side, which might make your application slower or which might make it difficult to scale your APIs. In the token based, we need the pro is obviously we need not store anything on the server. Uh, every user data is in the token itself. But again, the uh, token might be misplaced. The token might be someone else might get hold of the token and they can use the token to access private information. And we need to send all the user data every time. So as the data of the user increases, as we just noticed, we added a role in our token, and the token size increased. So if we want to store a lot of information about the user, the token size will become huge, and that might be an issue. In case of session, we'll just send a session ID every time, so it's not very it does not become very big. So I think that's it for this session. We implemented JWT, looked at what authentication is, looked at what's the difference between authentication and authorization. Uh, that's it for the session. Any doubts at all? In the next session, will be Joshi sir will be taking it. Dhruv Joshi sir will be taking it. It will be on Supa base. I think it will be on Saturday, so you should attend it, right? That's it. If you have any doubts, you can ask it in the chat. Ask it in chat. Unmute your mic, or you can DM me on WhatsApp too. All right.